हूँ। संजीव जी एक बहुत ही प्रतिभाशाली एकता के शिक्षक हैं, जिनका उद्देश्य जीवन को पूरी तरह से व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना और दूसरों को उनकी उच्चतम क्षमता तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करना और उनका नेतृत्व करना है। संजीव जी कंप्यूटर वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और जैव इंजीनियर हैं, जो न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त करके आए हैं। एक बड़ी मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधन टीम के हिस्से के रूप में उन्होंने लाइफ साइंसेज डिवीजन को सफलता की ओर अग्रसर किया, जो सिद्धांतों को सिखाता है। 2012 में उन्होंने खुद को सार्वजनिक सेवा और आंतरिक विकास के लिए समर्पित करने के लिए इस वित्तीय आकर्षक स्थिति से बाहर निकले। संजीव जी कुशल संगीतकार, गायक, लेखक, कवि और अभिनेता हैं, जिनकी कई प्रकाशित रचनाएं मंच और मीडिया प्रदर्शन में हैं। संजीव जी ने भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी के दोनों शिष्यों पंडित नागराज राव हवलदार और पंडित माधव गुड़ी से किराना घराना परंपरा में कई वर्षों तक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। गुरुजी ऋषि प्रभाकर जी द्वारा आयोजित सिद्ध समाधि ध्यान तकनीक के एक सर्जक और आचार्य के रूप में संजीव जी ने भारत और अमेरिका में हजारों व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आनंद पूर्वक और सफलतापूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरणा दी है। जैन धर्म से ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के माध्यम से स्थापना प्रशिक्षण फोरम, विपासना ध्यान एवं जैन मठवासी के रूप में जीवन के लिए परमानंद में रहने के लिए एक आजीवन खोज उन्होंने ध्यान और भक्ति के रूप में एक नई रोमांचक यात्रा शुरू की है। संजीव जी अपनी आध्यात्मिकता यात्रा जारी करते हुए 2012 में उन्होंने कोलोन कैंसर के साथ एक मुठभेड़ देखी। खुद को स्वस्थ करने के अनुभव ने सभी जीवन में खुशी लाने के लिए अपनी करुणा और उत्सुकता को भी और गहरा कर दिया। इसके बाद संजीव जी खुद कहते हैं, मेरी तलाश अब ये है कि संगीत, विज्ञान, कॉरपोरेट प्रबंधन, आध्यात्मिकता और जीवन में मेरी सीखें कैसे सभी को खुशी से जीने के लिए प्रेरित कर सकती हैं और एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन सकती हैं जो मानवता का सर्वश्रेष्ठ पोषण करती है। So that's all about संजीव जी, and I think last quote जो है वो sum up करता है कि what is your vision about this world, and I think वही हमें next 1-1.5 घंटे में आपके साथ जुड़ के पता चलेगा। तो over to you संजीव जी, thank you so much. Welcome. Yeah, so Sanjiv, you can just share your journey of pre-SSY, pre-marriage, post-marriage, post-SSY, and right now also, you know, so wonderful. उनके जर्नी में बहुत कुछ, उनके जर्नी में, I will make co-host, maybe co-host also. So उनके जर्नी में बहुत ऊपर नीचे हुआ है, and he has gone through everything with a smiling face, and साधना मतलब खूब साधना किया है, करते रहेंगे, उनका लाइफ ही एक साधना है. So he will share his journey, and of course at some point we'll put all the questions. I'll start with some questions, and why I called Sanjiv today and not last week, and why not next week, वो मैं भी बोलूँगा, उनको ही मालूम नहीं, लेकिन I'll share with him. शायद I can guess, so, but yeah, maybe I can guess. But thank you very much, Manoj ji and Kapila ji. Can you hear me? You can hear me? Yes. Great. तो ये मेरा हिंदी में इंट्रोडक्शन मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ, पता नहीं किसने ट्रांसलेट किया, किसने बनाया, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा. मैं सोच रहा था ये किसके बारे में है भैया, बहुत तो बहुत मजा आया सुनकर और बहुत ही अच्छा था. एंड ऑफ कोर्स our as Manoj ji said, our connection goes many years and in many areas, all the way from cricket to music to meditation and to creating a wonderful world. तो पूरा हमारा full spectrum connection है. And speaking about जो first के बारे में बात कर रहे थे, Manjo, you can be side by side so I can see you also. Yeah, I'll be after a few minutes. Okay. So speaking of first, you know, one more first for us, I think it was love at first sight.
तो मुझे याद है जिस जर्नी की बात कर रहे थे मनोज जी, देहरी जा रहे थे हम लोग, उससे पहले बस में चढ़ने से पहले ही हम लोग इंतजार कर रहे थे बस का। उन दिनों में थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स का इश्यू रहता था, तो बस मोस्टली टाइम पर नहीं आती थी, निर्धारित समय से कुछ कुछ घंटों बाद आती थी। तो वहीं हम फुटपाथ पे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं बस के लिए। और मैं तो मनोज जी से पहली बार ही मिल रहा था डायरेक्टली क्लास के बाद। ये एएमसी, ही वाज गोइंग टू कंडक्ट द एएमसी, एंड सो आई जस्ट वाज लुकिंग एट हिम एंड आई सेड, आप पारसी है क्या? उन दिनों ज्यादा वो तो ही, एंड of course knowing Manoj ji and how he is, do you remember what your response was, Manjo? No, no, I don't. Because his features and like that, he resembles he could easily be a Parsi. So I said that, and Manjo says yes. So I to concluded, of course, he's a Parsi. Of course, later on I found out he's not a Parsi. So us din aage jaake I found out कि he was born and brought up in Kunur or somewhere in the south in the initial years. Coimbatore. Coimbatore. So then I assumed he's South Indian. So I said, "Acha, he's South Indian and Parsi nahi hai, but a very different looking South Indian." And of course, later I found out he's neither Parsi nor South Indian, but he's from North India. And then, of course, later I found out after that he's neither Parsi nor South Indian nor North Indian. He's a nobody. So that was the progression. But anyway, जो कपिला जी ने बताया, I mean, right? Kapila was yeah. So that was, a nutshell about my journey. But it has been one heck of a ride this whole life. And continuously learning. It has just been an amazing trip. And Manoj ji has been a part of that journey, ever since 1992. Very much part of it, whether we were all the way from staying together in USA for many days, for many months, all the way to many years where I was in USA, he was here, and we hardly spoke for years and years. But still, that connection, that bonding is so strong. It's so powerful that I feel we have been walking this path together every step of the way. And and always say, ki jo one of course, Guruji has given us this knowledge, and Guruji has given us many pointers and guidelines in our life and experiences. But मैं तो ये कहूँगा कि सबसे बड़ी जो भेंट है गुरुजी की, और शायद हम सब इस बात को से सहमत होंगे कि सबसे बड़ी जो गिफ्ट मिली है गुरुजी से, वो है जो हमारे साथीदार है इस जर्नी के, particularly Manoj ji for me and everyone that I have encountered in SSY. That connection, that relationship, कि उन्होंने एक एंटेना बनकर जो जिन ऊर्जाओं को, जिन व्यक्तियों को आकर्षित किया अपनी ओर, और वो ऊर्जाएं एक दूसरे से जब मिली है, then that is the magic that he has created, which is much more powerful than anything else, and the best gift that he has given to the world. So it is very poignant, and it is wonderful that this has happened, that we are meeting again on Gokulashtami, which is also Guruji's birthday. So as a tribute to him, I'll just spend a moment remembering Guruji, thanking Guruji for bringing Manoj ji and so many beautiful souls into my life, including each and every one of you as well.
Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha Akhanda Mandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Tasmai Shri Guruve Namaha Tasmai Shri Guruve Namaha. Great. So, ever since childhood, I'd always wanted to. मुझे यही देखना था कि कैसे इस दुनिया को हम जो हमारी जो आदर्श दुनिया है उसके तरफ कैसे ले जाए। ये मुझे मेरे ख्याल से बचपन यानी बिल्कुल मुझे लगता है 3-4 साल की उम्र से मुझे ये सोच किसी ना किसी रूप में मेरे मन में थी कि जब भी हम बच्चे देखते थे रास्ते पर भीख मांगते हुए या बहुत ही गरीब, तो ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन वी बी सिटिंग इन अ कार एंड दीज किड्स आर आउटसाइड? तो यही यही प्रश्न को लेकर बहुत सारी प्रवृत्तियां मैंने आई वाज पार्ट ऑफ सोशल वर्क एंड वॉलंटियरिंग in I think 4th or 5th standard camps to the villages and things like that. लेकिन जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे लगा कि यार ये वॉलंटियरिंग करके या ये जो हम कर रहे हैं कितनी छोटी सी एक्टिविटी है और कब जाके इस सारी दुनिया को कैसे हम कैसे हम बदल सकते हैं, कैसे जो हम चेंज चाहते हैं वो कैसे होगा। कितनी सारी समस्याएं, वेदर इट्स पोल्यूशन और क्राइम और वॉर्स एंड डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज, दिस दैट, आई मीन देयर आर millions of things. How will we ever reach that goal? और उसी को लेकर transcendental meditation or living life as a Jain monk or as a Buddhist monk for many for a long time I had experienced all of those things in search for that answer. लेकिन एसएसवाई और गुरुजी से जब मुलाकात हुई तब एक जैसे एक चाबी मिल गई कि ये सारी जो बातें हैं, सारी समस्याएं हैं, उसका मूल कारण एक ही है और वो मूल कारण यह है कि इंसान खुश नहीं है, आनंद में नहीं है। क्योंकि जब हम आनंद में है, खुश हैं, तो कोई 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 भी चैलेंज मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसानी से हो सकता है। ये सारी दुनिया में इतना कुछ है कि सबके लिए बहुत कुछ है। सो the key was how to that rather than that the main thing is how to bring happiness to people, how to create, how to have people know and understand that they are the source of their own happiness so that they stop struggling to find happiness outside. And वो एसएसवाई से मिल गया, वो गुरुजी से मिल गया और मनोज जी के साथ रह के अनुभव हो गया कि दिस इज द वे, दिस इज हाउ वी वांट टू लिव।
And so उसी को लेकर, whatever music I've created, whatever songs, whatever articles, poetry, poems, and all the classes and so on, whatever I have shared is just been an expression of that. And I'm so excited, that this life keeps on bringing new and new challenges, new and new opportunities to serve, opportunities to love, opportunities to grow in lovingness. तो बस यही सफर है, यही चलता रहे. So of course there's a lot more to life. You cannot condense into a few minutes, but anyway, whatever little glimpses and through our talk and interaction and questions, whatever, बातें निकलती रहेंगी, हम बताते जाएंगे. Great. So, and I don't know, we'll have a lot of things to share and a lot of things to say, but so You want me to tell you some cues that we can just flow no, with it? you want me to continue? I can continue. Yes. You continue a little story of pre-SSY, post-SSY. Okay. Share Okay, your sure. story and then we'll take it from there. Okay, sure. So another few minutes. So yeah, so pre-SSY का तो मैंने बताया ही कि I was fortunately, as far as reading and as far as understanding, I have been uh, given the gift of understanding and the intellect to know a lot of things. So I've been interested in so many things, and have had the opportunity to learn music. I am into sports. I'm into music. I'm into any form of art, any form of science, physics, mathematics, you name it, astronomy. So ये प्री SSY, ड्यूरिंग SSY, पोस्ट SSY सब कुछ चलते ही रहा है. So once after, so one more thing about me, I've spent half my life in the US, all the way from going for my master's degree at Columbia University way back when I was in my early 20s. तो 10-15 साल यूएसए में था, फिर गुरुजी मिले यहाँ आकर इंडिया में, और मैंने मूव टू इंडिया फॉर 10 years, and that 10 years I was only doing SSY, only with Guruji, going wherever and conducting classes, conducting AMCs and DSTs and teachers training and whatever came along. So that was a very intense period of SSY activity. At one point in this process of conducting classes and being in SSY, with मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ that yes, we are moving towards an ideal world and doing all that we can to move towards an ideal world, and then if that is true, then why SSY and why AMCs and why BSTs and why TTCs? Everyone is perfect the way they are, and whatever stage of life, whatever the journey is, सही है और वही होना चाहिए. जो हो रहा है जिसकी जीवन में वही सही है. तो क्यों जाके हम why do we need to interrupt that whatever that life journey is, and introduce anything? Let it just be. तो ये बात को लेकर I actually decided to withdraw from teaching SSY. Living SSY, of course, that can never stop, has never stopped, and will never stop. But teaching SSY, I kind of took a little bit of a backseat. So for about 10 years, I was still supporting Manoj and RSVK in whatever way that I could financially, because I was leading a business in the US, which was doing very, very well. So whatever way I could support, I was supporting. But as far as teaching is concerned, I took a little bit of a back foot.
in the midst of that, I decided कि अभी हम वापस चल घर वापसी का एक सपना था जो USA से, तो हम वापस आ गए in at some point in 2010, and almost a few months after arriving in India, I was very, I mean, thanks to SSY, thanks to pranayam, thanks to whatever lifestyle of vegetarian and whatever, even in the USA for 25, 30 years, I'm, always remained vegetarian, because that's just how I am. So in spite of all that, there was absolutely no risk factors or anything. I still got diagnosed with cancer. And that was ये 2012 में हो गया. और it came as a surprise, and Guruji, of course, was still there, and one of the first people that I spoke to after finding out was Guruji. And and I still remember what he said to me. He said, nothing. Nothing it is, just you'll be fine. And that what he said, plus of course all these years and years of being in this okayness, being in knowing that no matter what the circumstances of life are, no matter what the body is doing or saying, I am not that. And knowing that, ये जानते हुए बड़ी हंसी खुशी से ये जो बीमारी थी उसको एक चुनौती की तरह लेकर हंसते हंसते सब कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि okay, because you are you have this understanding and knowledge, you don't take care of your body. Yes, I am nobody, but yes, I do have a body, and which needs love, which needs care. तो जो भी सर्जरी, कीमोथेरेपी, जो भी करना था वो सब कुछ हो गया. But it happened with laughter, it happened with joy, it happened with so much lovingness. Yeah, so that's where I would like to intervene, because I was just going to share that only. That Sure. I remember you sharing some photos of yours smiling and some messages of yours. Hey, Manjo, I'm doing it. I mean, going through this chemo and this one, this one, this one. But and means you were really laughing about it, and you told me about your daughters sharing about how you were. I think the doctors were surprised, and that how is this guy, this अजीब सा पेशेंट आ गया कि जो हंस रहा है, तो हर चीज में हंस रहा है. आई मीन वो कीमो जा रहा है, हंस रहा है, ये क्या है, कौन से टाइप के अजीब हो गया. That was I remember those few interactions we had at that time. Right, during those. And after Guruji, I think you told me, and I said, I don't know what I told, but I just said we can go through it easily, like that. No But matter what. your daughters, I think they are all doctors. So they said, no way, Right. Papa, you gotta come here. Come here, Correct. Yeah, Guruji said SSY pranayam से सब कुछ हो जाएगा, आ जाओ इधर मेरे साथ. But my daughters didn't want to hear any of that. They are both doctors. All that crap they didn't want to hear. They are doctors. ये वो सब ठीक है, but you and in fact this is what I have concluded also in my life, कि there is nothing that is not spiritual, whether it's chemotherapy or surgery. That is also part of the spiritual knowledge which we have at our disposal, given by the divine. So why not use that as well? It is not that one is spiritual and other one is not. So इसी को लेकर, I mean, I remember when we were laughing like crazy during the chemo. You cannot imagine the nurses who were there. They were also उसमें एक funny thing that happened was that during the chemo, they also give you a little cocktail of little painkiller and sedative and things like that. But the first time that I took the chemo, तो वो जो calculation उनका होता है is of an average American man, because this was all happening in the USA. So average American man is maybe 1.5 times my size and 1.5 times my weight. So the dosage they had prepared for the sedatives and the painkiller or whatever concoction they had was according to the American average weight.
तो मेरे लिए तो वो ओवरडोज हो गया। तो ओवरडोज होने से वजह से मैं बिल्कुल एक मतलब आई वाज एक्चुअली इट वाज ऑलमोस्ट लाइक एन इंटॉक्सिकेशन। So I was just in high spirits as if I had had too many drinks in a bar. वो ऐसी अवस्था थी मन की। तो वो नर्सेज मुझे बाद में बताया उन्होंने कि क्या जोक्स किए आपने और क्या क्या हंसाया हमको। इट वाज अनफॉरगेटेबल। And in fact, when the last chemo happened, they were all on one side, of course, they were sad to see me go, but they were happy it was over. But they were celebrating that this experience that we've had of all these chemos with has been really wonderful. So they lined up and threw whatever the confetti they call, वो छोटे छोटे कागज होते हैं as I was leaving. But anyway, the point is that because of this knowledge, because of meditation, because of this understanding, because of all this, and this I will attribute to Manjo also in my life. That I was able to laugh through it. And it is possible, no matter what comes up, it is possible to see that it is not you, that you are free from anything that happens in your life. And that's the direct experience of that. तो कीमो के बाद कॉन्सर्ट्स, म्यूजिक, पोएम्स बहुत सारी लिखी हमने ड्यूरिंग दैट therapy and all that. So that was that phase. And then after that, one thing I mute पे है मैंजो। जैसा संजीव बताए थे कि हर चीज यू कैन मेक एनीथिंग स्पिरिचुअल, दैट्स व्हाट उनका खासियत है, संजीव, दैट anything you can make spiritual. So what one thing, I mean, I have learned also, and I keep learning many things from him, from you, Sanjiv, but one of the things I learned is very obvious कि मेरे दिमाग में पहले तो आई एम फुल एमटीवी गाय, एंड प्रायर एसएसवाई सिर्फ बाहर का दुनिया, पार्टिंग, सडनली आफ्टर एसएसवाई अंदर का दुनिया में, देन आई गॉट फिक्स्ड इन द आइडिया मेरे दिमाग में कि आई स्टार्टेड सिंगिंग भजन, म्यूजिक शुरू किया, भजन 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 भजन। लेकिन ये फिल्म सॉन्ग भी आध्यात्मिक हो सकते, अच्छा ऐसा भी है क्या? तो ये मुझे the best, one of the wonderful gifts I got from Sanjiv was the introduction of spirituality through Bollywood songs, and of course everyone knows him by that also. All of you all know him. One of the areas we know him is by that. So he started this called SSY Top 10, and I remember the first, we had one big program in Patkar Hall in Nariman Point. You remember that? That was the first. Unforgettable. And मैंने भी भाग लिया, मैंने भी 2 गाने गाए, वो भी अपने गजल rather, that way. But that was the introduction, and then I had one intermediate part. He said नहीं तो तू ये बीच बीच में गाया कर, okay? तो मेरे को स्टेज में बिठा दिया था first time. I mean, one of the first few time on big stage, 700-800 people are there. I mean, so I was singing the Hare Ram. वो भाग भी मुझे वही भाग दिया, Hare Ram Hare Krishna 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 Hare, that way. But this introduction of seeing everything as spiritual, and that is what I love about Sanjiv, that everything he'll take, and then of course now even I see, I mean, everything is spiritual. There's nothing like that. Like Mother says, we are spiritual beings come here for a human experience. वही मैं बार बार दोहराता हूँ। तो हर चीज आप आध्यात्मिक के रूप से, even if you go to a bar and you're drinking, okay, that also can be spiritual. Okay, anything can be spiritual. आपका नजरिया change करना है. So that's what, Sanjeev, you're ready to sing something, looks like. Yes. Hare Krishna, वही जो Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. So one of the hilarious incidents we have had, I understand, you understand, na? ये हम शब्द बोलेंगे ना, you understand, तो हम दोनों में हंसी हंसी, मतलब ये चलते जाएगा, सिनर्जी सिर्फ ये होगा. You understand, Sanjiv? You understood know what I mean. तो Oh gosh. हम लोग गोवा गए थे. We have never laughed so much in our lives as much as this particular one. मैंने बिजनेस छोड़ा और उसके बाद में बिजनेस छोड़ने के बाद मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे थे. उसने भी कुछ उधर से अब्रॉड से यूएस से रिटर्न आया, उसके पास भी कुछ पैसे थे. तो वैसे चल गोवा चलते हैं, किसी ने हमको बोला, किसी ने हमको इनवाइट किया, गोवा चल उधर कुछ लैंड वैंड लेते हैं. आई आल्सो वेंट, वी टू वेंट एंड बस में गए, वो स्लीपर बस, पोलो ट्रेवल्स. वी वेंट एंड जिसने हमको इनवाइट किया, वो इनवाइट किया, फोन में बात किया, ये सब फिक्स हो गया था. एंड वी गो एंड जो सुबह सुबह पहुंचे 5:30 बजे, ओके 6 बजे उधर गोवा पहुंचे, बस से निकले एंड वी आर वेटिंग हियर. वो पिकअप करेगा. कोई आया नहीं, व्यक्ति आए जो लैंड के लिए बुलाया था, जो हमको बोला कि मैं दिखाऊंगा ये लैंड वगैरह वगैरह वगैरह. आया नहीं. हम बोले क्या करे. आधा घंटा उसको फोन किया, फोन नहीं उठाया. फिर उसने फोन किया, मतलब भी 1-1.5 घंटा रोड में बैठे थे कि तो आएगा. चलो छोड़ यार, नहीं आ रहा है, चलो अभी आए हैं 2-3 दिन की, लेट्स एंजॉय. हमने कुछ मेडिटेटर्स को फोन किया, उनके घर चले गए. चलो आप है ना इधर, चल हम आते हैं. उनके घर गए और देन वो 3 दिन में हम वो व्यक्ति को, ओके उसने फोन नहीं किया, हम उसको 3 दिन में 3 अलग अलग जगह मिले थे, गोवा के शहर में, उसके घर में, इधर. और वो मतलब जब हम मिले थे, अरे आप आने वाले थे लेने को. मीन इट वाज हिलेरियस. एवरी टाइम ही विल से, उसके हर वाक्य में यू अंडरस्टूड ना. मतलब वो बोलेंगे तो हमारे हंसी आई. एनीथिंग मतलब ये मैं पानी पी रहा हूँ, ये ग्लास में पानी पी रहा हूँ, यू अंडरस्टूड नो व्हाट आई मीन. इतना ऑब्वियस. एनीथिंग या एनीथिंग. My name is Sanjiv, and then he'll say, "Acha, you're Sanjiv. You understood? Know what I mean?" So it was hilarious. Means वो जो 3 दिन हम बिताए साथ में और बस में बैठे वापस रिटर्न जर्नी. So whole bus was wondering, वो क्या 2 पागल लोग आ गए, हंसते गए और हंसते हंसते मतलब आंसू निकल गए. I have never laughed entire life as much as. Neither me, neither I. Oh my God, I'm sure बस में सारे लोग ने सोच लिया कि ये लोग चरसी है, चरस बरस पी के बैठे हैं, क्योंकि इतना कोई ऐसे ही हंस नहीं सकता है. उतना मतलब उतना पागलपन से हंसे, खुल कर हंसे. मतलब इट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन. गोवा से probably 1/3 of the way we were laughing like mad. बॉम्बे टू गोवा पिक्चर देखा ना, तो गोवा टू बॉम्बे, Goa to Bombay was a full laughter session. Oh my goodness, unforgettable. So we have shared, I mean, both of us have shared many of moments of this nobodiness, and we continue to do it. I remember once हम लोग when I was, we were there in US, हम लोग US में वो class, अब मेरा class खत्म हो गया, and then Sanjeev was going to take the class, next class. So he had come, we took one class together.
तो हम लोग को ड्राइव के लिए गए, मी, संजीव एंड हर्षा, आई थिंक 3 of us only were there, or maybe one more person. We were going for a drive, and suddenly it started to snowfall hua, and I got too excited. I said, Sanjiv, first time I'm seeing snowfall. रुका गाड़ी, अरे बाबा ये यूएस है, ये रुक नहीं सकते हाईवे में, चल रुकना, देखते हैं क्या होता है, तो रुको, मेरे को रोको, I want to dance and I want to play in the snow. I think, अरे this is US बाबा, this doesn't work like this. देखते, and we got up, we all ran highway में, we stopped the car, we went and we started dancing, singing, just like that, enjoying that snowfall. So 10 मिनट में आवाज है, सब पुलिस आ गए, lights on. What are you doing here? What are you doing here? Can I see your driver's license and registration, please? I thought definitely I shat, USA. Even he said, okay, sorry. He just come to enjoy. What? This is not a place for enjoyment, man. You go home and do whatever you want. So we've had shared very many memorable moments of nobodiness. जो SSY में कि बस खुल के गाओ, खुल के नाचो, खुल के हर चीज जो खुल के करना है. Whenever we meet, we get into that, this thing. जैसा उन्होंने बताया कि हाँ, काफी टाइम से कभी नहीं मिलते, 6 महीने नहीं बात करते, साल भर नहीं बात करते, लेकिन जब बात करते, like I'm speaking to you after a long time now also, and it's like no, कल ही तो मिले थे, कल ही तो मिले. It doesn't feel time has passed. This is the beauty of SSY, सिद्ध समाधि योग की जो गुरु जी ने गिफ्ट दिया, उन्होंने बताया था कि relationships. So I think many of us must be experiencing this. हमने Zoom में बात की है, लेकिन we feel we are meeting. When we meet in real this thing, we really feel we are meeting. How many of you feel like that? You can write on me, like that. This gift of relationships is something beautiful we all share, Yes, Chandan is there. Chandan bhai. Yes, Chandan. We are all in that same boat. मुझे याद है, ये तो कुछ 6-8 पागल लोग गए थे. ओके, तो हम लोग दादर में सत्संग होता था. ओके, दादर में तो मैंने ये कुछ I was super active in getting training teachers and whatever. तो 10-12 लोग को तैयार किया कि teachers training. तो ये जो 10-12 में से, I think how many of you went? Sutur gang, 8? Yeah, six of us. 6, 7, 8 of from the Mumbai. 12-15 में से 6-7 लोग ये इकट्ठा करके गए. And when मैंने तो भेजा, मैं क्या होगा, ये लोग जा रहे हैं टीचर ट्रेनिंग, और मैंने उनको तैयार तो किया था, लेकिन as per SSY norms जो गुरुजी ने तय किया था कि ये 4-6 चीज होना चाहिए, और वो 6 में समझो 6 there were 6 eligibilities. तो ये जो 6-8 व्यक्ति थे, उनका एलिजिबिलिटी सिर्फ 3-4 हुआ था. मैंने पेपर साइन कर दिया, एलिजिबल कर दिया, उनको भेज दिया. एंड अंदर से मुझे घबराहट होती थी कि यार, आउट ऑफ 6 एलिजिबिलिटीज सिर्फ 3-4 थे, और मैंने उसको साइन कर दिया पेपर और भेज दिया. व्हाट विल गुरुजी टेल अबाउट दीस 6 नमूने जो भेजा था. नाम क्या है? संजीव, कुलिन, फिर चारुल, वैभव, नीरव, चंदन, and 1 or 2 like this Sutur gang. Chandan can Sutur gang at some point. So ये भेज तो दिया. I was wondering what will he share. But when they came back, I said, wow, this is the best thing I have ever been part of in my life. One of the best things कि इनको भेजा, because the way they came, and I think you can share that experience when you came and Chandan came around. I was more than me being happy. I heard how Guruji was praising these Bombay namunas. You can share. Yeah, क्योंकि हम जो ऑलरेडी जो एक एस्टैब्लिश हो गया था, एक
एएमसी के वजह से, वजह छोड़ो, जो भी एक ग्रेस जो हमें मिल गया था, सो वी वर, वहां पे there was a shortage of water, there was a shortage of little bit sanitation, there was a shortage of good food, and so many things were not as per what we might have expected or thought ki hona chahiye. And we were 600 teachers in training, okay, 600 at one place. So तो बहुत सारे कंप्लेन कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जो थे बंबई से, जिनका गुरुजी को शायद सबसे ज्यादा फिक्र थी कि ये बंबई वाले तो इसको भाग जाएंगे यहाँ से, उसकी जगह में व्हाट वी हैड, we were we were so much simply flowing in love and in joy. हम गाने गा रहे, खाना नहीं है तो क्या हुआ, अरे ये बर्तन करने हैं तो हम, कोई बर्तन नहीं करने जा रहा है क्योंकि उतने मतलब दे आर नॉट सो हैप्पी विद द फूड, नोबडी वाज आफ्टर द फूड, दे ऑल लेफ्ट, but we six we were there washing the big vessels and singing and bhajans at the same time, and just in such a high energy and such high spirits. It was, living life to the fullest, and really we experienced that it is not your circumstances, Baba. It is nothing to do with the circumstances. It has to do with you, not with the circumstances. And that became so clear to us, and we became so close. And Guruji put us up as examples. Ki dekho how these people are, we were feeding each other rather than worrying ki mujhe mila ki nahi. We were feeding each other all the time. Chandan, you remember? We were just feeding each other, making sure the other people are getting the food and all that. And the interesting thing is, I mean, the TTC was 21 days, but this all happened in the first few days itself. And then when Guruji at one of the gatherings said, okay, listen, look at this group, how they're enjoying this place. Just look and see how you can also get into this flow. And people started getting that. It got transmitted. And the funny thing is, within a matter of 2 or 3 days, wo initial thoda sa teething problems tha, logistics, but after the 3rd or 4th day, the food was fantastic, the place was comfortable, the sanitation started working beautifully, everything was just, so the physical, the inner and outer just kind of came together, and everything just started flowing anyway. In fact, out of all the teachers trainings जो गुरुजी ने करवाया किया उनके द्वारा, तो this was every time वो उसका जिक्र करते, सुतुर तीसरी, सुतुर मैं तो नहीं था, लेकिन ये लोग तो थे हमारे representative मुंबई. I know. So Chandan, you can share a few words on that. Sutur, and if Kulin is there, then Kulin also Sutur. कभी भी देखो वही बात करते हैं, सुतुर. ये ज्यादा अटैचमेंट भी हो गया, ज्यादा उनका वो भी है. चलो बोलो. Yeah. So it was a marriage of minds, we all just merged into each other. I mean, what we talk about being in energy, we experienced it for those 25 days, and it was pure magic. The electricity, the spark which flew amongst us, that was crazy. We would Crazy get high. is the right word. Crazy is the right word. Yeah, Crazy. You cannot call it anything else. We were getting high on eating a packet of crackjack biscuit. We would get it like, you have to walk 1 kilometer away from the location, which was that temple area, which was out of the Sutur village actually. And we had to walk and buy that. We were not allowed to leave the temple. And in the evening walks, we would go and we would steal and buy that one packet of crackjack between us. And then we would all share, and like Sanjiv said, feeding each other on that. Oh my God, those sleeping on the river banks in the moonlight, singing songs till late in the night, or rather early in the morning. Amazing. It was a magic. Magic happened. See, normally I was the teacher. Okay, मैं teacher and I am training volunteers to go for teachers training. So I am supposed to be higher than them, like मैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ, उनको भेज रहा हूँ, उनको ट्रेनिंग कर रहा हूँ. तो ये लोग आते हैं वापस 1 महीने के बाद वापस, और फिर they are sharing their experience
they are sharing their experience in the stage, the other hall. And then I started wondering, "है मैंने भेजा है या ये लोग मुझे मेरे टीचर ये है, मैं टीचर हूँ या ये मेरे टीचर है?" Really, because their energy was so high, and that's the beauty. मैं क्या चाहता हूँ is just because मैं आपके साथ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ तो I am higher than you, ये सब बेकार बात है. You know, you can be the first time coming and your energy can be higher than me, no problem. We are here to share our energies, you know. तो जिसका ये एनर्जी ऊपर नीचे होते रहता है, अगर आप ये सुन रहे हैं साथ में, ओके, तो ये सुन रहे हैं तो आपका एनर्जी इससे हाई भी हो सकता है, यू नो. सो वी आर ओनली शेयरिंग आवर एनर्जीज. तो मैंने तो हालांकि उनको भेजा था, लेकिन when they came back they gave me what energy means. मेरा अगर it was like this, it was here and then they were here, then I sent them, they went here and then they pulled me here, you know. So it is not about who is टीचिंग हु और कोचिंग. तो जब आप गाइड करते हैं लोगों को, जब आप कोच करते हैं लोगों को, जब आप शेयर करते हैं लोगों को, वो शेयरिंग, कोचिंग, गाइडिंग, टीचिंग, ये सब जो एक बहाना है. वी आर डूइंग इट फॉर आवर ओन सेल्व्स. सो वी आर जस्ट होल्डिंग ईच अदर्स हैंड. ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. It's all about, you know, lighting each other's lamp. So Sanjiv wants to say something through music. Let him share whatever he wants to say. Yeah. So Manoj mentioned the spiritual top 10, the SSY top 10. So एक गाना ही हो जाए उस नाम पे. Yes. So of course, like, you know, most of you know, and if you don't know, it is even in Bollywood songs, if you really look, if you have the eye, एक नजरिया आपका है, तो उसी में भी आपको divinity, godliness, wonder नजर आएगी किसी भी song में. Any song, there is no song which does not remind me of divine. No song. But some have a very, just a slight shift in your point of view, and it happens. So like, this is one of my favorite songs these days. तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल. तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा है दिल मुश्किल. ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा. तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा. मेरा आसमां ढूंढे तेरी जमीन, मेरी हर कमी को है तू लाजमी. जमीन पे ना सही तो आसमां में आमिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल. Beautiful, beautiful. Yeah. That is Sanjiv. He just is more a spontaneous person, and he will, and in fact, he is guiding Nina's baguette factory very beautifully. वो उसके बारे में थोड़ा. We'll just take a little pause for segment intending, Sure. and then we'll come back to question answers and one my question to him also, very interesting one. Okay. Yeah. Yeah.
विजय जी Unmute. अनम्यूट करिए अपने आप को। ओके सॉरी। सो सेगमेंट हाँ, इंटेंडिंग, आवाज आ रही है अभी? क्लियर है? Okay. तो सेगमेंट इंटेंडिंग जो है एक प्रोसेस है, हम हर 1.5 घंटे के बाद ब्रेक लेते हैं। तो अभी एक ब्रेक लिया है तो हम करते हैं सेगमेंटिंग। सबसे पहले हमको क्या करना है, तो पिछले 1.5 घंटे को हमें धन्यवाद करना है। तो सबसे पहले हम जिसको बिलीव करते हैं, जिसको मानते हैं, उसको धन्यवाद देंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी फॉर शेयरिंग सच वंडरफुल नॉलेज विद अस। देन हम थैंक यू बोल सकते हैं कोई भी एक वस्तु को, एक चीज को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप ज्वाइन कीजिए उसको आगे। फिर हम थैंक यू करते हैं पूरे जो है 1.5 घंटे के लिए। नेक्स्ट स्टेप जो है जहाँ पे हम प्रेजेंट के लिए करते हैं, जहाँ पे जिनको ये मुद्राएं मालूम है तो वो फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्टली जाएंगे तीसरी स्टेप, जहाँ पे दोनों हाथ आपको हृदय चक्र पर रखने हैं और आने वाले 1.5 घंटे को जो है उसको हमको निर्माण करना है। सो आई विल से जस्ट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप आगे जो है वो ज्वाइन कीजिए कि आपको आने वाला 1.5 घंटा कैसे चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। नाउ क्विकली हम जो है थोड़ा सा जो है डिवाइस के बारे में जानते हैं। जो कुछ लोग नए हैं या आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं जिन्होंने, तो उनके लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। यस विजय जी, विल डू इट क्विकली। यस, तो ये हम कहते हैं कि हमें आप रोज जो है आपको अभी पूरे 365 डेज जो है रोज एक हिंदी और एक इंग्लिश वीडियो आपको मिलेगा, उसको आपको देखना है। And we also have one joy shop almost every day on different variety of topics. यस, तो डिजाइन लाइफ सीरीज क्या है, तो आपको अगर उसको अच्छी तरीके से समझना है तो कम से कम आपको जो है पूरे महीने में 4 फुल जॉय शॉप अटेंड करने हैं। अदर वर्ड्स में अगर बोले तो एक हफ्ते में आपको एक जॉय शॉप जो है पूरा अटेंड करना है। बाकी टाइम आप जब भी चाहिए, तो जितना भी आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे वो अच्छा रहेगा। यस, हर मंडे को हमारे पास म्यूजिकल सत्संग होते हैं टॉपिक में। फिर हर वेडनेसडे को जो है प्रैक्टिकल टूल सिखाया जाता है। हर थर्सडे को हम पेरेंटिंग पे वर्कशॉप करते हैं। हर फ्राइडे को सिनर्जी होती है, जैसे कि आज हो रही है। हर ट्यूसडे और सैटरडेज को हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे जॉय शॉप्स लेते हैं। हर संडे को जो है मनोज जी एक नए टॉपिक के साथ आते हैं और हमको हमारे साथ शेयर करते हैं नॉलेज। जॉय शॉप डायरी, जैसे पहले भी बताया था कि आप अपनी हर कोई जो भी जॉय शॉप का पार्ट है वो सब इस डायरी को मेंटेन करते हैं टू टेक इम्पोर्टेंट नोट्स। तो यहाँ पे जो जितने भी जॉय शॉप्स हुए हैं और हो रहे हैं रेगुलरली, तो सीरीज 1 में हम लोग ने फर्स्ट जॉय शॉप देखा था, वो था मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड। यस, सेल्फ लव। जस्ट लेट गो। किस तरह से हम अपने गुस्से को चैनलाइज कर सकते हैं। हम हमारी आदतें कैसे नई जोड़ सकते हैं और पुराने जो नहीं चाहिए उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं। किस तरह से हम मनी को, पैसे को आकर्षित कर सकते हैं अपनी तरफ। द आर्ट ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पैसा और बहुत सारी खुशी। वैसे ही बहुत बढ़िया रिलेशनशिप, बहुत बढ़िया रिलेशनशिप, बहुत बढ़िया रिलेशनशिप। मैनिफेस्टिंग रिचनेस। होलसम कम्युनिकेशन। किस तरह से मैं अपने शरीर को और ज्यादा हेल्दी बना सकती हूँ। देन सीरीज 2 यहाँ से स्टार्ट हुई, जहाँ पे हमने फर्स्ट देखा साइंस ऑफ लीडरशिप, जहाँ पे टू लीड पीपल वॉक बिहाइंड देम। किस तरह से आप अपने आप को हर बीमारी का इलाज खुद से कर सकते हैं। वैसे ही पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, रोज करो, थोड़ा करो बट रोज करो। किस तरह से मैं खुद को और जान सकती हूँ, ये जॉय शॉप उन लोगों के लिए है। इस चॉइस में हम जानते हैं कि अदर्स जो है वो भी कैसे सही है। किस तरह से हम जान सकते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल मैजिकल वर्ल्ड है और यहाँ पे हर जगह मैजिक होता है। 10 इटर्नल कमांडमेंट्स, 10 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लाइफ को और बेहतरीन बना सकती है। यस, और किस तरह से मैं अपने माइंड में और क्लैरिटी ला सकती हूँ ताकि और फोकस रह सकूं। 7 कलर्स ऑफ रेनबो, 7 आदतें जो हाईली इफेक्टिव पीपल अपने लाइफ में यूज करते हैं, उसके बारे में नॉलेज। और ये जॉय शॉप है, जानिए 7 मिस्टिकल लॉस
और इस पूरे ब्रह्मांड के। तो अगेन हम कहते हैं कि अगर आपको इससे पूरा बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको इससे या डिजाइन लाइफ जो है, डिजाइन योर लाइफ, उसको ज्वाइन कीजिए और कम से कम एक हफ्ते में एक फुल जॉयशॉप जो है अटेंड कीजिए। बाकी के टाइम पे जैसे हम कहते हैं वो 5 से 15 मिनट 1 घंटा भी डिनर टाइम में एज ए खाना खा रहे हो तभी भी आप देख सकते हो एज ए टीवी। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। यस, आप चाहो तो इसे इंग्लिश में करो, हिंदी में करो, किसी भी लैंग्वेज में आप इसे चूज कर सकते हैं। तो अगेन मैं कहूंगा कि एवरी डे आपको एक हिंदी और इंग्लिश में वीडियो मिलेगा जो आपको रोज सुबह वॉशरूम जाने से पहले देखना है या वॉशरूम में देखना है। यस, और जैसे हमने पहले भी पूछा था, जो भी लोग पहली बार आए हैं और हमारे डिज़ाइन योर लाइफ सीरीज़ का पार्ट नहीं है, आप फर्स्ट टाइम लिख के अपना व्हाट्सएप नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। यस, तो हम लोगों ने काफी क्विकली किया क्योंकि संजीव जी से बहुत कुछ Great. जानना है, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। इसके लिए ओके, ओवर टू यू संजीव। Great, Kapila. And sorry, I Wonderful. think I'm meeting you for the first time, Vijay. Beautiful. यस Wonderful. यस। Okay, thank you. Thank you. Great. Yeah, so I'll ask the first question. Wait, before you go, Manjo, just one thing I wanted to share. Yeah. So you can, there's side by side भी कर सकते हैं. Side by side view if you can, that'll be good. Great. So as I was sharing earlier कि एक तरफ से मुझे जो एक realization हुआ that everything is divine. Not only everything, everyone is divine. Then why SSY and why we, in SSY, of course, we start with the SSY class and end up in, let's say, the retreat जो होता है जहां हम नारायण प्रोसेस या किसी भी जरिए से हम एक अनुभव की एस्टैब्लिश हो जाता है कि ना ही हम एक उसी ऊर्जा, उसी देवत्व का तत्व है, लेकिन हर कोई वही है, हर कोई वही है, हर चीज वही है. Then why SSY? That was what kind of got me to take a little bit of a backseat from teaching SSY or spreading SSY. So there were a few years where Manjo and I were interacting on this particular, conversation ki yaar tu ye all these things that you are creating, wonderful, but aren't we forgetting something, that we are divine? तो ये थोड़ा 2-3 साल चला, but now That's my question to you. Okay, so I exactly. Okay. To that. So it'll flow more. Ki, why do you think I called you today? Why not why not I could have called Synergy next week करते थे या इससे पहले करते थे. मेरे मन नहीं, आज का ही दिन करना है, आज का ही दिन. Any guess, Sanjiv? Yeah, of course, it is the debate between doing and non-doing, Right? And you are in the non-doing scope camp, Right. so it is a perfect. I want ये जो टॉपिक अभी स्कोप कैम्प चल रहा है, अभी आप देखेंगे तो बहुत लोग उधर है, 50-60 लोग है, 60 correct. They are already watching. So this topic is non-doing, the science of non-doing, which is Vaishkarmya Upanishad. In fact, SSY का मतलब है the सिद्ध समाधि योग, the science of non-doing. उसका टैगलाइन है, and Guruji is there. तो ये हमारा जो ये संजीव जी अभी बता रहे थे आपको, तो ये हमारा डिबेट काफी सालों से चल रहा चला. It is like the story of Mandana Mishra and Shankaracharya. Absolutely. In this case, संजीव बोलते तू क्या कर रहे हैं, सेगमेंट एंडिंग, PRS, ये लिया SMS, awareness and catharsis, and ये करो वो करो, सुबह करो, रात को क्रिएटिव 10-1.5 घंटे में पॉज कर, तू क्या कर रहा है भैया आपने. मैं तो ये करूंगा. If you ask me, I used to get bugged. But and I'm sure that he also probably he can share for himself, but he would also get irritated to doing, and I say, why don't you understand doing? I'm not teaching doing, I'm teaching non-doing. doing, I'm teaching non-doing. So yeah, I think, but since 1 year or something, we have not spoken a single word. I have understood what he is doing, Sanjeev. I think he has understood what I am doing.
एक Yes. साल से ना तो मैं उससे कुछ इसके बारे में बात किया, ना तो नहीं उसने मुझे जिक्र किया। We नहीं just understood कि both are teaching, not doing anything. I am going this way, he is going this way. उनका जो कहना है मैं डायरेक्टली जाता हूँ, मैं बोलता हूँ आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप, correct. बात एक ही है, ये दो फिलॉसफी है, नेति 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 नेति, दैट मीन्स not this, not this, not this, not this. And there's another philosophy which not this, not this, ये चिदानंद रूपा. So, I शिवोहम am not the शिवोहम. body, I am not the mind, I am not the intellect, I am not this, I am not this. This is one philosophy. The other philosophy is everything is yes, yes, yes. Even the prostitute is a god in prostitute. Even the murderer, prostitute, there's God in. So both these philosophies go together. It ends with one thing only. Everything is from the source. We are zero, nothing. Same way, doing and non-doing. कि डूइंग का मतलब है सुबह 4 बजे, लाइक मंडन मिश्रा, 4 बजे उठो, फिर ये प्राणायाम करो, फिर ये करो, फिर मेडिटेशन करो, फिर ही मोक्ष होगा, ये सब बेवकूफी है. दैट इज क्लियर इन द एनलाइटनमेंट क्वेश्चनर इन एसएसवाई. सो बिकॉज मेरा प्रेम है एसएसवाई से, तो मुझे इस तरह से कि आई स्टार्टेड टू कि मुझे सबको भर्ती करना है एसएसवाई में, क्या करे, नहीं आ रहे, अच्छा चलो प्रेग्नेंट लोग तो आएंगे, क्यों, मैं प्रेगनेंसी के बाद में बात करूंगा तो प्रेग्नेंट लोग भी करेंगे, फिर बिजनेस लोग भी आएंगे, क्यों, मैं बिजनेस की बात करूंगा, फिर वो आएंगे. तो इस तरह से हर माध्यम से मैंने ये किया, एंड इन द प्रोसेस ये बहुत से डूइंग 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 इट अपीयर्स डूइंग, but I was sharing with them. So now you can share your concept of non-doing. Jo, that's the topic of this. Correct. Finally, we have arrived at the topic. Half an hour away from closing, anyway, or less. But बिल्कुल ये जो एक sort of spiritual dance that Manjo and I were engaged in for a couple of years. कि जैसे उन्होंने बताया कि यार हम नॉन डूइंग कुछ भी नहीं करने की बात कर रहे हैं और तू सिर्फ करने के सिवाय कुछ बात ही नहीं करता, ये कर वो कर वो कर, फिर ये नहीं हुआ तो वो कर, और भी कर, दिन भर कर, रात भर कर, सुबह उठ के कर, शाम को सोते वक्त कर, अरे सोते सोते भी कर और सपने में भी कर. तो करते ही जा. और हम निष्कर्म की बात कर रहे हैं. तो एक at one point, I don't know when or how or whatever, through the reading, through meditation, or through grace, actually, finally, this understanding has dawned on both of us in our own ways. कि where does this, ये दो जो ईस्ट और वेस्ट लग रहे थे वो कहाँ मिल रहे हैं, इक्वेटर पे या कहाँ जीरो पे, कहाँ, where does this meet? And that's what the realization was. And now we don't have that sangarsh. But what is that? What is that understanding? तो जैसे मैं बता रहा था कि जो मैं टीचिंग से थोड़ा सा मैंने बैकफुट पे ले लिया था, क्योंकि एवरीवन इज डिवाइन, एवरीवन इज गॉड, देयर इज नथिंग दैट नीड्स टू चेंज, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल. सो व्हाट इज लेफ्ट देन? ओके, इफ एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज डिवाइन, सो एंड इट्स नॉट दैट आप ये सेगमेंट इंटेंडिंग करोगे, पैटर्न्स चेंज करोगे, या मनी वेल्थ अबंडेंस, आप ये सब कुछ करने के बाद आप वहां तक पहुंचोगे जहां आपको पहुंचना है. दिस इज द थॉट प्रोसेस इन मोस्ट पीपल, कि वहां पहुंचने के लिए ये सब करना जरूरी है. 20 साल मेडिटेशन करो, केव में, गुफा में जाके बैठो, या फिर ये सारी जो टेक्निक्स जो मनोज जी बताते हैं, वो कुछ ना कुछ करते जाओ, एक दिन आप जरूर पहुंचोगे. दिस इज द thought process. And the realization was that there are two ways to do all this. Let's take meditation. अगर मैं दिव्य हूं, मैं दिव्य शक्ति हूं, और ये सत्य है, नहीं अगर नहीं, मैं हूं ही वही. ये शरीर तो सिर्फ मेरा एक रूप है, जिसको मैंने धारण करके मैंने अपने आप पे ये मुखौटा जैसे मास्क जो लगाया है शरीर का, ये चेहरे का, वो तो एक मुखौटा है. वो मैं नहीं हूं. तो इस शरीर को या मन को शांत करके या अशांत करके या मेडिटेशन से शांत करके क्या कर लोगे? क्योंकि तुम तो वही हो. अगर शांत हो तब भी वही हो, अगर व्याकुल हो तब भी वही हो.
अगर आप मर्डरर है तब भी वही हो, अगर आप बहुत ही महान संत हो तब भी वही हो। तो जब हम वही है तो ये सब क्यों फिर? तो ये सो द स्टेप इज कहां से आप आ रहे हैं। मतलब आप अगर सोचते हैं कि मैं ये सब करने के बाद उस अवस्था तक पहुंचूंगा या पहुंचूंगी जो बहुत दूर लग रहा है मुझे, तो आप करते जाएंगे और ये एक स्ट्रगल है क्योंकि यार उठना, ये हर 1.5 घंटे ये सेगमेंट इंटेंडिंग करो, ये नोट्स लिखो, इट्स अ स्ट्रगल। देयर इज नो वे दैट दिस हैपेंस easily. You have to remind yourself, you have to bring yourself to these classes, you have to go to the scope camp, go to Kathak Khadak, be with Manoj. All this is all part of the journey and the struggle to become something more, to get something more, to be more, whatever it is, whether it's wealth, health, happiness, जो भी आप सोच रहे हैं उसकी तरफ जाने के लिए it's a struggle. Um, the other way, which is what I bring, and so is what Manjo calls, and I also call it the direct path. कि तुम्हें वहां कुछ वो सब करने की, it's a step by step journey, but just take a look. This whole thing is just an imagination. Whether you are a saint, a millionaire, or a pauper, it is still only you. There is nothing else. All this is simply a play. And when you look at that, what is left then? You don't need meditation की हम बात कर रहे थे. You don't need to meditate. It is not necessary to meditate. You are already divine. However, or let's take, so you are already divine. Now, take anything, whether it's meditation or pranayam or yogasana or any of those things. You don't need to do that. You are divine itself. In fact, there is no you. There is no separate you. This body itself is a creation, is a figment of the imagination. ये एक सपना जो है वो चल रहा है. ये सपने के अंदर आप जो भी करो, जो सपना देख रहा है उसको तो वो तो जैसा है वही है, divine, right? So in a dream, whether you meditate or you do yoga or you travel or you do exercise, the dreamer does not change. The dreamer is still in the dream, dreaming this dream called life. So just like that, we as the dreamt characters in the dream of divine, हम उस सपने के अंदर चाहे ये करे वो करे, सेगमेंट इंटेंड करे ना करे, हम तो वही है जो सो रहा है यानी जो सपने का सर्जन कर रहा है. It is the dreamer which is dreaming this dream. Now the dreamt character can do whatever, it makes no difference. In fact, it is all just happening in the dream. It is just happening. There is nothing like doing. Even if you say, I am going to do segment intending, that thought, I am going to do segment intending, just happens. It comes to you and you do segment intending. It is not something you do, it just happens. So now going back to this understanding कि आप meditation करो या ना करो, आप वही हो. तो once that understanding becomes you, becomes your life, कि मैं, that I can drop all of these concerns about wealth, about health, about my body, about relationship. It doesn't matter. It's okay. I am this divine soul on this divine journey called life. And whether in this divine journey I sit on the merry-go-round or I sit on the Ferris wheel makes no difference. It is still all part of that. So once you realize that, then what? Then you have So I think he is frozen. Am I right, Vijay? सुनाई दे रहा है? Now Yes, he's yes, now he's back. Then Okay, what? sorry. The last statement. Then what? Okay. Yeah, so now you have a choice. Up till then, you don't have a choice. If you don't have the realization that I am this divine soul on a divine journey, living dream of God or divine or consciousness or whatever name you want to give it, मैं वही हूं, तो मैं ये करूं या वो करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन ये जब समझ आ जाती है
और यही समझ कैसे आएगी, वही मैं जो रिट्रीट कंडक्ट करता हूँ, या हम जो वननेस ओपन डोर में जो हम मिलते हैं हर हफ्ते 2-3 बार, एंड आई विल पोस्ट डिटेल्स अबाउट दैट, और एनीवन हु इज पार्ट ऑफ दैट, इफ यू कैन पोस्ट द टाइमिंग एंड ऑल दैट, दैट विल बी गुड. बट वो जाने के बाद देन इट बिकम्स अ चॉइस that I am this divine soul living this divine journey, and no matter what I do, it doesn't really matter. Now, if I choose to meditate, if I choose to do yoga, actually even before that, so when I realize that I am only that, what remains to be done? What needs to be done? अगर मुझे पता चल गया कि मैं वही हूं, मैं ही नारायण, मैं ही सरस्वती, मैं ही लक्ष्मी का एक स्वरूप हूं, तो क्या बचता क्या है फिर करने को? क्या सेगमेंट इंटेंडिंग करेंगे? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्या, फॉर व्हाट? सो what really remains to be done is only one thing. Anyone can guess what is that one thing? What remains to be done once you know and realize that this is all just a game? What remains to be done? Can you put in the chat window? Yeah, nothing. Okay, nothing is one thing. This is the vairagya mode, कि मैं कुछ नहीं करूंगा, बस एक गुफा में जाके बस समाधि ले लेता हूं. ये एक ऑप्शन है. Enjoy each and every moment, playing, staying in oneness, playing the game. In one word, the only thing that remains is to Celebrate. nobodiness. Nobodiness is an understanding. Observe, enjoy silence. Silence से भी आगे. Okay, silence is very good. This is where you reach. जब ये रियलाइजेशन आता है, आप साइलेंस में पहुंच जाते हैं, नोबडीनेस में भी पहुंच जाते हैं. लेकिन वहां पहुंचने के बाद क्या? What after that? Joy. You're very close. Very close. Blissful. Create. One word I'm looking for. Celebrate. 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 Exactly, Manjo. We are on the exact same page, and I know it. Celebration is the only thing remaining. Now, celebrate जो शब्द है, उसको लेकर एक नैरो डेफिनेशन हो सकता है सेलिब्रेशन का. सेलिब्रेट का मतलब क्या है? सेलिब्रेट मीन्स व्हाट? पार्टी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे. कितनी टाइम तक? मान लो हमने, चलो ओके, नाउ आई हैव अटेन्ड दिस नोबडीनेस, दिस एंड this understanding and this experience that I really, this body is nothing. I am that. I am this universal consciousness. समझ में आ गया, अनुभव भी हो गया. और वो कैसे होता है, वो हम वर्कशॉप्स में, रिट्रीट में समझाते हैं. लेकिन हर एक को ये समझ बहुत ही आसानी से 1 2 3 in 5 minutes we can get it. उसके बाद क्या? उसके बाद when there's nothing to do, there's only celebration. So, and then now how to celebrate? You cannot have a पार्टी करोगे तो क्या 1 घंटा डांस करोगे, म्यूजिक करोगे, नाचोगे, गाओगे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, फिर क्या? उसके बाद हर एक कोई पार्टी में भी कोई 10 घंटे या 24 घंटे तो पार्टी या जश्न नहीं मना सकता है. Then how to celebrate? How to celebrate? How to celebrate is everything that you can express celebration. Meditation, segment intending, changing your pattern, overcoming anger, creating wealth and abundance as a celebration, not as a goal, but as a starting point. With a goal, I will become enlightened or I will become wealthy. Nahi. I am everything. I am beyond wealth. I am more than wealth. I own the entire universe. What is there to earn and what is there to accumulate? I own everything. From that. So I'll just intervene. I'll say the other side of it, and then we'll take a few questions from people. Right. Manjo, let me just close this thought. So in that case, the first question was, why meditate? Because you want to be enlightened, because you want to be calmer, because you want to overcome anger, and all that drops away. I meditate because that is one way for me to celebrate my silence.
I do yoga because it is one way to celebrate this body. Pranayam is a way to celebrate energy of life, prana. Um, segment intending is a way to celebrate gratitude, to celebrate all the gifts that I'm receiving each and every moment in each and every item. So it's a matter of turning this whole process 180 degrees. So and Manjo and I talked about this also, ki jo is journey pe hai, all of you who are in DYL and so on, you can also come to this oneness understanding, which is in a way, but in which there is nothing to do. Okay. You come to this understanding, and with this understanding, when you return to this same thing you may be doing, you may have heard the story: before enlightenment, chopping wood, fetching water; after enlightenment, chopping food, fetching water. तो ये enlightenment का जो journey है, उसी के, that is what I love to share and love to bring to, to the open door and whatever platforms that I'm speaking and teaching on. But with that knowledge, then this whole changing patterns become just एक बहाना है celebrate करने का, of our playing with our mind, playing with, okay, I have these qualities, breaking habits because, oh, I have this, playing with habits, playing with, okay, giving up smoking or taking on some habit of getting up early in the, whatever it is, the whole thing can be a game. And that is when it is simply a celebration. That is what non-doing means. Non-doing doesn't mean don't do anything. Non-doing means do everything you're doing, but from celebration and not from burden, not from I have to, I should, I must. Yeah. Beautiful. So whatever Sanjiv said, he's वो कौन से भाग से आता है, you must understand these both phenomena, कि वो कह रहे हैं कि actually कुछ, if you know your energy, if you know your दिव्यता and consciousness, फिर क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या meditation, क्या ये आंख बंद करना है, क्या segmenting, क्या PRS, क्या gratitude, क्या आप जब भगवान आप ही है, तो भगवान को थोड़ी बोलने का, ग्रेटिट्यूड करने का, फॉरगिवनेस करने का, ये सब कुछ है नहीं. इनफैक्ट मैंने 25 साल फॉरगिवनेस के बात ही नहीं किया, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आता था कि क्यों करना है फॉरगिवनेस. जब मैं, इफ आई एम जीरो, देन व्हाट इज द यूज ऑफ, आई मीन दिस फॉरगिवनेस मींस आई फॉरगिव यू, मींस आई एम देयर, so I forgive you. Correct. Again, when I read the book Forgiveness, then I stood, yeah, that's where I came from. After 25 years, I started giving these doing techniques of all these things, whatever I've been segmented and When I read 3 books, first I read Forgiveness book, then I read Zero Limits, then I read one more book, Magic. These 3 books, I said, and I started interacting with people. Then I realized that, yeah, these people are not getting this answer. You know what Sanjiv is saying? Of course, now he's there to give it, but they are not getting. So I said, ये करके देखो, and not ये करके, मैंने भी खुद किया. Okay? तो मैंने अब पहला मैंने नेबर के ऊपर ही किया, ये तो चल रहा है, ये तो चल रहा है. So I started to do all these, and then so many techniques we have given. The latest one I gave today was, you don't know about it, but it's TYT, TYL. So what is TYT, TYL? One more technique, okay? But these are tools. Remember, the tool is not the end. These are tools, or these are, so because hum meditation, I mean, we are not getting ki hum zero hai, or we are not experiencing we are zero. So Guruji also introduced meditation. So yeah, meditation is not important. मेडिटेशन के बीच में ये जो गैप है ना, 8 घंटे या जो भी है, उसमें कितना टाइम हम गिरते हैं, ऊपर आते हैं, हाउ मेनी टाइम्स वी कैन रिमेंबर वी आर नोबॉडी, दैट्स द की. सेगमेंट इंटेंडिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट. द 90 मिनट्स के बीच में हाउ मेनी टाइम्स वी कैन रिमेंबर वी आर नोबॉडी, दैट इज द की. टू रिमेंबर इट, वी आर गिविंग दीज स्टेप्स और टूल्स. Finally, it's like a mantra. Finally, the tool has to be dropped. When we learned meditation, we learned one mantra. Mantra is a rope. Rope has to be used, and when you start meditating, then the rope is forgotten, the mantra is also forgotten. Same way, these tools are there to take you to the state of non-doing. When you are in the state of non-doing, then the tools drop. So this both things goes. He's coming from samadhi to yam. I am going from yam to samadhi. I am giving the steps, and he's saying this is where it is.
Guruji also said, Guruji also would laugh if he had heard all these things. He would laugh at this vision, kya Manoj bhai bol raha hai, vision. But when he meets people one to one, he'll say, go and be with Manoj bhai. This also he will tell. So he knew what he was doing. Basically, ye dono cheez is, both are true, both are this thing. What Sanjiv ji is saying is direct non-doing. What I am saying is do till you reach non-doing. You use both, whichever suits you. If you are already in a non-doing, then this doesn't require. And if you are not there, then use these steps. You will come to a point where you can drop that doing and it becomes non-doing. So both are wonderful. Now I don't know whether you've understood it or not, but you can question and you can put any questions to Sanjiv ji. He will answer. If I have some answer, I will also answer. No, but now we can both say to everybody, you understood, know what I mean. You understood, Sanjiv, what I am saying? You understood, know what I mean. Yes, I also understand. Great. It's wonderful. I tell Nina also, whenever I hear many of your Wednesday satsangs with the Baggett people, Hamar Saath. So I just love it. I said, yeah, you're either, they follow, I mean, they go by your way. It's so beautiful if they go. They नहीं समझते तो बोलो मेरे पास आना, मैं उनको स्टेप देता हूँ. Right. Absolutely. हम वहां से आ रहे हैं कि you are already on the top of the mountain. Now enjoy the view. And Manoj ji is giving you steps to climb up, how to climb up the mountain to go at the top and see the view. Right. But I'm saying, even if you're on the top of the mountain, you can come back to the ground, but knowing that the view is there in your mind and living, knowing that the view is actually present. So dono karna hai. Dono sahi hai. Or that is what, so I want to actually use this to invite all of you also. We'll be announcing a retreat on this topic of direct path, the oneness, in sometime in September, October. Please come. Also, I've posted the YouTube channel where all the open door gatherings are there. Please go to that and see the YouTube videos, and join us on the Tuesday, Thursday, Saturday sessions. Everyone is invited. So saath, it's, both together is where the great zenith meeting point is happening. It's the Manjo way, the Sanjo way. Yeah, Deepak, I think you are ready to ask some question. ऐसा है? हाँ, तो ask. Yes. Deepak is there in our AMC hall. Wonderful. Sanjiv ji, Sure. Good. I can hear. Yes, go ahead. perfect. I have a question, like Sanjiv ji, to you. What motivates you to to give this knowledge, or to be in knowledge 24/7? As far as, like, we are entrepreneurs, and money motivates us to do the business. But what motivates you? You don't get any kind of incentive, any kind of money or something. But like, you are 24/7, you guys are providing this knowledge, and you are behind each and everyone. हाथ पकड़ के उसको इतना करते हैं. So what is the motivation behind you guys? Correct. Very, very true. Very great question. So what motivates me, I'm sure, is also what motivates Manoj ji and all the teachers and all the people who are so actively involved. Because it is certainly, from a लेन देन की पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये बिल्कुल बनता नहीं है. ये बात ही नहीं बनती बहुत. But of course the gift of being in this knowledge, because हम अपने आप को अगर एक मिनट भी पूछेंगे कि क्यों हम आए हैं इस धरती पर, क्यों है हम यहाँ पे, तो कोई नहीं कहेगा कि मैं पैसे बनाने आया हूँ. शायद एक बार कह भी देगा, लेकिन अपनी खुद की गहराई में देखेगा तो यही जवाब आएगा कि मैं प्रेम लेने, प्रेम देने, यही मेरा मकसद है इस जीवन में आने का. क्योंकि ultimately also money, there's nothing wrong with money, but what you want to do with money, what you think you want to do is कि मेरे पास अगर बहुत सारे पैसे होंगे तो बहुत सारे लोग मेरे साथ होंगे, बहुत सारी बातें होंगी जिसकी वजह से लोग मेरे से आकर्षित होंगे, और मैं भी ये पैसे और जो भी कंफर्ट्स है या जो भी कन्वीनियंसेस है मेरे परिवार के साथ, मेरे दोस्तों के साथ बांट सकूंगा. क्यों?
क्योंकि परिवार और दोस्तों को आप प्रेम देना चाहते हैं। वो पैसे भी आप अल्टीमेटली उसी के लिए है ना, करोगे क्या? बैंक बैलेंस बढ़ा बढ़ा कर क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे? क्यों आप ये जब सेलिब्रेट करोगे, या शादी है घर में, या जो भी है, आपका घर है जो इतना अच्छा है कि लोग आते हैं वहां पर, तो वो पैसे का यूज क्या करना चाहते हो? उसके लिए कि आप प्रेम दे सको और प्रेम पा सको, यही आप चाहते हैं। पैसा खुद अपने आप में तो कोई मतलब ही नहीं रखता। सो अल्टीमेटली दैट्स व्हाट यू वांट। सो वी हैव इन सम वे अंडरस्टूड कि वो चाहिए भाई अपने को, अल्टीमेटली तो वो चाहिए। तो डायरेक्ट जाते हैं ना उसके ऊपर, ये पैसे के थ्रू क्यों जाए? डायरेक्ट वही जाते हैं जो हमें रियली चाहिए। तो ये जीना, उस ज्ञान को लेकर जीना, उसमें जो प्रेम देने का अवसर मिलता है, प्रेम पाने का अवसर मिलता है, तो जिंदगी पूरी वही उसी में जा रही है, विच इज द अल्टीमेट ट्रेजर। And this is a ultimately available treasure to each and every human being, each and every person. And no matter what the circumstances of your life are, whether you are a pauper or you are a rais, वो मौका तो है ही है आपके पास प्रेम अनुभव करने का। तो टाइम पास के लिए पैसे बना लो, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम विद मेकिंग मनी, टाइम पास कर लो, बट अल्टीमेटली आपको वो चाहिए। तो ये समझ को लेकर ही, दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग, you know, and it's so automatic कि whether we are teaching is not, it's just happening. If I'm making a song or writing a song, I'm simply the song just flowing, the music is simply flowing, it is not something I'm doing. तो ये non doing और doing में जो shift आ जाती है, that is what motivates all of us. And nothing wrong with continuing to be an entrepreneur, but understand that that is what your real goal is, कि पैसे को भी इसलिए बनाओ कि आप प्रेम बांट सको। Great. Thank you very much. Wonderful. Beautiful. Thank you. Beautiful question. Anyone else, you want to write some question, or you can answer in the AMC hall in case you're there, you want to ask. So like you said, आप कौन से कॉन्शियसनेस से क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सैलरी कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, जो भी है, कौन से कॉन्शियसनेस से कर रहे हैं। एंड well, many people, entrepreneurs, they are there to make money, but they don't know why. Like we had an interaction today, that why you want to reduce weight, what for, or why you want to make money. The final thing is we want happiness. So if you get direct happiness, then you don't need to make money for the sake of making money. You can just be happy and make money and share that wealth with whosoever you want to. You are just enjoying making it. In fact, entrepreneurs like Guruji, पहले सब जो बोलते job people were SSY teachers. After about 15 years, then Guruji said, no, now I want all entrepreneurs to be SSY teachers. क्यों? क्योंकि वो बोलते नहीं, उनके पास ज्यादा कैपेसिटी है जो इसको ये जो आत्मज्ञान है सबको बांट सकते। बेटर देन एंटरप्रेन्योर्स अगर क्षत्रिय है तो दे हैव मच मोर पावर टू कन्वर्ट अ कम्युनिटी इन लाइक दिस। दैट्स व्हाट शंकराचार्य एंड ऑल डिड। सो जितना आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उतना आपके अंदर में वो ताकत है या कॉन्शियसनेस है या एलिजिबिलिटी है दैट you can transform a whole society also instantly if you are living in that consciousness and you are also a kshatriya, or an entrepreneur. So entrepreneurs like Deepak, you have 400-500 people working with you. You are already giving that SSY gyan to them and all this. It's beautiful. So you are really taking that knowledge to your company. Make it, and more companies like this do it that way. Okay, anyone else? Or you can share. Yes, I would like to ask something. Yeah. Okay, Sanjiv ji, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं, ये who is this? Who is speaking? Vijay here. I'll just spotlight one second. Yes, Vijay here. हाँ विजय बोलो। Okay. So मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि जैसे आपने बोला कि ये डायरेक्ट ज्ञान है, ओके, सो वो रियलाइजेशन आपको कब हुआ? जो एक इंसिडेंट आपने मेंशन भी किया कि जब आप वेंट थ्रू द कैंसर का ट्रीटमेंट एंड ऑल, सो डज दैट मेक यू टू थिंक डीपर लेवल? क्योंकि काफी लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है जब वो
बोलते हैं ना कि मौत के दरवाजे पे जाते हैं और रिटर्न आते हैं, देन दे स्टार्टेड फीलिंग लाइक देयर इज एवरीथिंग इज नाउ आई हैव टू एंजॉय, एज यू सेड द सेलिब्रेशन, बिकॉज बिफोर दैट हम सब जो है डर से पूरे जीते हैं, डर डर के जीते हैं। बट जब वो रियलाइज होता है कि नहीं ये कुछ है नहीं, जब तक वो वहां तक पहुंचते नहीं है, वो टच करके नहीं आते हैं, तब तक ऐसी कुछ चीजें। राइट राइट, नहीं तो बहुत बहुत वेरी गुड पॉइंट कि लेकिन तो हाँ, कैंसर हुआ तो तभी वो एक और एक बत्ती चमक में आ गई कि मतलब ये शरीर जो है वो कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि दिस अंडरस्टैंडिंग इज अवेलेबल टू एवरीवन एट एनी मोमेंट, एट एवरी मोमेंट। इट इज नॉट समथिंग, अरे ऐसी कोई मौत के दरवाजे तक पहुंचो, स्मशान वैराग्य हो जाए तभी ये होगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको अगर पूछूंगा विजय जी, आप है क्या, आप है कि नहीं है? कांट डायरेक्टली से दैट नहीं है कि है, नहीं, जैसे है। नहीं है, हाँ, आप है तो सही, देयर इज नो डाउट इन योर माइंड कि आप है। ये कोई लाल को पीला कहेगा, पीले को हरा कहेगा, हरे को काला कहेगा, वो उसमें बहस हो सकती है। लेकिन ये प्रश्न कि मेरा अस्तित्व है, मैं हूं, इसमें कोई, देयर इज नो टू ओपिनियंस, मैं हूं। हर एक, ये 7 बिलियन लोग जो है सारी दुनिया में, किसी को भी जाकर एक रास्ते पे रोक के पूछेंगे उनको आप है क्या, वो कहेंगे हाँ मैं हूं। तो एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड आस्क यू इज कि विजय जी आपने कहाँ देखा कि आप है, कहाँ जाकर देखा, किस आधार पर आपने जवाब दिया कि मैं हूं? तो आपने आपके बैंक बैलेंस को नहीं देखा, आपने आपकी डिग्री को नहीं देखा, आपके कपड़े को नहीं देखा, आपकी ये बियर्ड जो है उसको नहीं देखा, आप हम दोनों गंजे हैं, उसको नहीं देखा उसको नहीं देखा, कहीं तो जाकर देखा कि मैं हूं। और वो जो है, जहां भी आपने देखा और जहां भी आपने ये अनुभव किया कि मैं हूं, वो बदल नहीं रहा है। वो ऊर्जा, वो जगह जैसी है। मैं अगर 5 साल पहले आपको पूछता कि आप है, तो आप वहीं जाके कहते कि मैं हूं। आप 5 साल के बच्चे थे तब मैं पूछता कि आप है, आप तभी भी कहते कि मैं हूं। तो वो जो मैं हूं का अनुभव है, आई एमनेस, मैं हूं, आई एम is available instantly to everyone at any moment. So that realization, that understanding that I am independent of these thoughts, independent of these words, independent of my degree, independent of my wealth, independent of my opinions, independent of my beliefs, independent of my actions. वो मैं हूं का अनुभव जब हुआ, तो तब से ये क्लैरिटी हो गई कि भाई यही है। और व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ दिस, जो मैं हूं। तो मैं जो हूं और आप जो है, वो दो अलग नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स दिस इज अ क्यू फॉर अ सॉन्ग, आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव लेफ्ट बट Yeah. So, okay, so you can sing the song and that will be the final. But I want everyone, while you're hearing the song, to write down what did you get out of this couple of hours. Please share on the chat box while you hear this. Okay. Because ये sharing जो है, it's a very thin line. Contrary हो सकता है कि ये doing है, non doing है. ये क्या समझ रहा है संजीव, एक कुछ बोल रहा है, मनोज उल्टा बोल रहा है. ये उल्टा उल्टा नहीं है, सेम है. But what did you understand, if you can? Yes. so just to before I go into the song, Vijay ji, just to conclude, it is not that like one event like cancer, of course, may have contributed, and every event in our life contributes in that journey, but it is available to everyone at any moment, even right now, to you, to see that I am, and यस, that कंप्लीटली एग्री। पर मेरा मतलब ये मैं कहना नहीं था कि उसको तकलीफ के थ्रू जाना ही चाहिए तब समझेगा, ऐसे नहीं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम नॉलेज है, सब चीजें हैं, बट जब तक वो अनुभव 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 नहीं नहीं, आता है तब तक तब वो तक चीजें नहीं होती है। ये स्ट्रगल रहता है जब तक राइट। अनुभव नहीं आता है। बट आई हैव गॉट न्यूज फॉर यू, ओके, आई हैव गॉट न्यूज फॉर यू। The question is not, we say that I understand what you're saying, but I'm not experiencing it, right? That is what the common.
I understand that I am divine, but मुझे वो अनुभव नहीं हो रहा है. This is the common theme and question, I think, in a lot of people. And what you are also saying, कि अनुभव कैसे होएगा? ये समझ में तो आ गया. The truth and the news I want to give you today is that it is actually the opposite. All you are experiencing, every moment, every single moment, every event, every word, every action, every sensation, every perception is nothing but the experience of divinity. That is all you are experiencing. And you are not understanding that. You are not understanding that all you are experiencing, every moment is divine. So it's actually the opposite of what you are saying. कि मुझे समझ है लेकिन अनुभव नहीं है. मैं ये कह रहा हूं कि हर एक अनुभव वही है, लेकिन ये आप समझ नहीं रहे हो. True, very true. That is what it is. Thank you so much. Thank you. जो तू है सो जो तू है. Everyone can write down on the chat box. जो मैं हूँ सो तू है, ना कुछ आरज़ू है, ना कुछ जुस्तजू है. Just be with these words, everyone. Make this the starting point of all your activity. Make this the starting point of all your participation in DYL, in SSY. Not the goal, not the destination, but the starting point. Happiness not as a goal, but happiness as the starting point of all your actions. ना कुछ आरज़ू है, ना कुछ जुस्तजू है. उठा जब के माया का पर्दा ये सारा, उठा जब के माया का पर्दा ये सारा, किया गम खुशी ने है मुझसे किनारा. गम और खुशी दोनों ने मुझसे किनारा कर लिया, यानी मुझसे दूर हो गए, यानी मैं उनसे अलिप्त हो गया. गम और खुशी दोनों एक हो गए. उठा जब के माया का पर्दा ये सारा, किया गम खुशी ने है मुझसे किनारा. जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है. ना कुछ आरज़ू है, ना कुछ जुस्तजू है. बस आराम मुझ में, मैं अब राम में हूँ. बस आराम मुझ में, मैं अब राम में हूँ. ना एक है ना दो है. This is the essence of non-duality, Advait. ना एक है ना दो है, सदा तू ही तू है.
जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, ना कुछ आरज़ू है, कोई आरज़ू नहीं, no wish, no desire, nothing to be attained, nothing to be gained, nothing is needed. But starting with that, moving towards abundance, moving towards a healthy body, moving towards an empty mind, moving towards a healthy mind, moving towards joyousness, starting with ना कुछ आरजू है, ना कुछ जुस्तजू है, वहां रुकना नहीं है, ना कुछ आरजू है ना जुस्तजू है, वहां रुक गए तो एक गुफा में जाकर बैठ जाओगे और समाधि ले लोगे, लेकिन उसके आगे जो है वहां से शुरू होते हुए, and this is the missing ingredient why 99% of the population is not interested in spirituality. Why? Because they think what we are saying is go and sit in a mountain and forget this world. It is not that. It is an incomplete story. When you realize there's nothing to be gained, nothing to be got, because you are already everything, then come and get everything. Come and get everything as a celebration. ना कुछ आरज़ू है, ना कुछ जुस्तजू है, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है. This is the essence. This is the essence. This is the essence. Lovely. So Vijay, you can just read the comments and then we'll close for the day. And, Yes, sure. So thank you संजीव जी. जैसे आपने कहा तो मैंने आपके 2-3 सेशन अटेंड किए हुए और उसके पहले मैंने आपका एक एसएसओआई आपने इनिशिएटिव किया था, उस टाइम पे सुना था. Okay. So most best quality I like about you is that the explanation what you give is so wonderful, so clear. बिकॉज उस टाइम पे भी मुझे उस एसएसवाई क्लास में, उसके पहले मैंने एक्चुअली एसएसवाई किया, आईएमसी किया, बीएसटी 1-2 दोनों भी किया था. बट हाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल, अगर दुनिया में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चीजें हो रही है, फिर भी मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया था, इट्स वाओ एंड वंडरफुल. मतलब उस टाइम पे मुझे वो समझा था कि कैसे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ हर चीज के लिए. So I like your quality about this. And the second thing is like music, तो no words for that. It's, I'm also a music lover. So मैं तो वो बोलते हैं ना मंत्रमुग्ध होना, वैसे हो जाता हूँ जब भी. और आपकी जो वॉइस की क्वालिटी भी जो है, it's hold the breath and hold the ears, like एक एक वर्ड सुनने के लिए रेडी करते हैं किसी को भी. So that's a great quality I would like to share. Right. So please come again and again, all of you. Please come Sure, and be sure. with us. And both of us, Manoj and I, are totally aligned. We are on the same journey ultimately. There is no two. So there is no two. ना एक है ना दो है. Sada tu hi tu hai. सदा तू ही तू है, तू ही तू है. Beautiful. Thank you so much, Vijay. Okay. ओके, सो मैं अभी रीड करता हूँ आपके लिए कमेंट्स है कुछ जो है लर्निंग जो है. सो लाइफ इज सेलिब्रेशन, एंजॉय सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग विदाउट फीलिंग आमनेस. योर एग्जिस्टेंस इज ऑलवेज देयर फॉरएवर. डिवाइन लव इज ऑल देयर इज. Accept the things as it is, experience of nobodiness. Suppose our journey is to reach Delhi, somebody takes flight, somebody take train, somebody bus, somebody by car, somebody bullock cart, somebody walk. So everyone someday or other he will reach his destination. This is my learning. There is a direct way and another way is like going step by steps. Choice is yours. How to celebrate each moment. Everything Beautiful. is spiritual, abundance, everything is okay, and that happiness is not the goal, but happiness is the starting point. This is the point is taken. So wonderful, everything is so great, and आज का सेशन तो बहुत ही स्पेशल रहा. So now thank I you so ask much. everyone, just put on your videos. We have a nice, wonderful photograph
the AMC people, they just come near the camera and just give a big smile and laugh or shout or whatever you do. Yeah, So we can. 1, 2, 3, we'll give a big smile and come close. Wait. I think let me go into gallery view. Is that? Yeah. we You are already in gallery. At least I can see you. Yeah. No, but everyone is in the same picture on the screen. Wait, Yeah, let me yeah, see. yeah. You are also there. Okay, Send great. you the photos of 1, 2, and give a nice smile. 3. Agnes, gratitude this way. 1, 2, and और videos on करिए भैया. Or more videos. Where is the class? I cannot see the everyone in the class Katar Khadak. people will give one big spotlight only for them. Okay, one second. Okay, nice. More videos, everyone videos on. Now all the class people, as many faces can we see in one? Let's see. Okay, in Where one is? shot. Wait, 1 sec. Yeah. गुरुदेव से जय गुरुदेव Same. सरळ पकड इकडे बघ थोड़ा नीचे camera, हाँ. Lower the camera. Wonderful. Big hug to all of you. जय Big hug. गुरुदेव Big hug to everyone in Katar Khadak and Bharat big bhai. hug Bharat Bhai, Deepak, so many faces, so many people no, but even the ones that I don't know, I love you all. I love you all very much. Thank you. Those are in KK, those are who are on Zoom, everyone, big hug, lots of love. And thank you, Manoj ji, for creating this opportunity for us to Super. share our journeys. And great. Thank you all. Love you all. Yes. Welcome back to India, Sanjiv. Yeah, thank you. I just arrived today. What a beautiful experience to come back to. Yes. Thank you. Great. Okay. Love to Bye-bye. all. Thank you. थैंक यू संजीव बाय Thank you. Bye. कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं, रोज मिलते हैं. थोड़ा रोज मिलते हैं. जरूर मिलते रहेंगे. Great. Thank you. आओ जो. पुढा बेटा पुढे Hi, Nina. Hi. पुढे भेटूया पुढे भेटूया. पुढे भेटूया. Okay. रोज भेटूया. Thank you. नंतर भेटूया नंतर भेटूया. Okay, great. Love you all. Thank you. Great. Very nice.